So very good morning, all of you guys. Am I audible to you? Good morning, everyone. Good morning. So very good morning, all of you. Good morning. Hi, everyone. Very good morning. Good morning. Okay, let's start the session then. So welcome to microprocessor course. Welcome to the session. So guys, today we are going to start this session. So I'll give you all the basic details regarding this session. इस session पे क्या क्या होता है सभी चीज मैं देता हूँ. The language, timings, syllabus coverage, when I will complete the syllabus, each and every single detail I'll be giving you. Okay. So let's start. Okay. So firstly, understand the importance of this subject microprocessors. जैसा आप लोग तो PSU का एग्जाम्स दे रहे हैं other than the gate exam some PSUs recruit on their own. There are some AE JE examinations happens in every state, and there are some I mean ESC examinations and many other examinations are there where this 8085 microprocessor is a part of your syllabus. Actually, in GATE also it is present up to 2021. इसके बाद तो ये सिलेबस से हटा दिया फॉर द गेट एस्पिरेंट्स बट बाकी सभी एग्जाम्स में अभी भी this is present and this is course is not available in our playlist also in the earlier subjects, okay, in earlier courses. So that's why I want to start this course. I need your support compulsory, your motivation compulsory. If you are regular to the classes, then only I'll continue up to the end of the syllabus. So please be regularly attend the live classes. This is the main motto because of which we have not started many number of courses this year on live. Okay. So आप ऐसा मत सोचना रिकॉर्डेड में देखते हैं बाद में देखते हैं these videos may or may not be present after some time. We may make it private also, depends on your sincerity. Okay, so compulsory please attend, compulsory don't miss these classes. So this is show your sincerity. ऐसा नहीं एक क्लास अटेंड करके दूसरा क्लास से जाएगा, ऐसा नहीं. Okay, so please keep these things in your mind. Okay. एक पार्ट एक पॉइंट सो सभी लोग को ऑलरेडी माइंड पे होता है अरे माइक्रो प्रोसेसर तो थोड़ा सा टफ है मेरे को याद नहीं आ रहा है. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स माइट फील इट इज वेरी डिफिकल्ट, समथिंग वेरी डिफरेंट. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. प्लीज बिलीव इन मी. Okay, many people might have attended my digital and network courses by this time already. You might know about me. Otherwise, believe in me. Just believe in me. I'll make this subject as easy as possible. I'll explain you to the core level such that you never think this subject is this much interesting and engaging. Okay, so please listen to me. I will be giving you the best possible content in the easiest possible way. You never feel even for one single question also you never feel it is difficult. Maybe थोड़ा सा ज्यादा याद करना वाला part है. अभी तो don't worry to remember the things. First you try to understand the things. You don't face even 1% of the difficulty also. All you need to do is attend all the classes. Attend all the classes. Okay, we'll start the session now. Chal, thank you. So this is about me. For those who don't know me, this is Bhima Sankar. I did my Mtech from IIT Kharagpur. I have 11 years of teaching experience in GATE and ESC throughout the country. I taught to several thousands of students in offline or online platforms in the last 11 years. So with my expertization in digital network microprocessor, I'm also teaching analog circuits and other subjects also. I'll be giving you the best possible content, no doubt in it. Okay. So आप लोगों को पता है जस्ट 2 मिनट्स 25th में आपको अन अकेडमी और गेट अकेडमी का कम्बैट चल रहा है. दिस इज द बिगेस्ट कम्बैट. अभी तक ऐसा कम्बैट ही नहीं हुआ. सो इस क्लास के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे देखो. जस्ट गो थ्रू द वीडियो डिस्क्रिप्शन आफ्टर द क्लास. Then there you will get a link and follow that. You will be getting the, I mean, just register in that particular link. You will be getting what we call registration for free. If it asks for a code, you can use my code शंकर 10 कंपेयर टू रेगुलर कम्बैट. इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है आपको. देर आर मेनी 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 एडवांटेजेस. ओके, सो if you have some difficulty while taking the subscription, call to the number 85858585. You will be getting the loan approval without with minimal paperwork. Okay,
चलो, let me start the course then. ठीक है? So are you ready for the course? Okay, चलो, let's start. Buffering ऐसा नहीं होता है. बाकी लोग बताओ, is it fine everything? Okay, is everything fine? प्लीज कमेंट यार, इज एवरीथिंग फाइन फ्रॉम माय साइड? आप लोग एक बार कमेंट करो. नो बफरिंग ना, ठीक है वो तो, चलो कोई दिक्कत नहीं. ओके, राइट. सो फर्स्टली लेट मी एक्सप्लेन यू द जनरल क्वेरीज यू विल बी हैविंग. ठीक है, जनरल क्वेरीज कुछ होता है ना, मैं बोल रहा हूँ. ठीक. फर्स्टली, कोर्स is about 8085. Okay, first we'll discuss this. Based on your need, if required, I'll teach 86 also. But if you learn 85, after that all other things you can learn on your own also. ऐसा भी हो जाएगा. ठीक है. 85 पे I will take hardly 20 to 25 hours. ज़्यादा टाइम ही नहीं चाहिए आपसे. ओके, 20 से 25 घंटे में कंप्लीट पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो स्केड्यूल क्या? The schedule here is every Saturday and Sunday. So ये तो I take 2 to 3 hours every Saturday and Sunday also. ठीक है, आप ऐसा मत सोचना संडे तो छुट्टी है ऐसा. प्लीज, आई विल ऑल्सो वर्क फॉर यू, यू पीपल ऑल्सो प्लीज कम. ओके, सो आज तो मैं 10 बजे शुरू कर रहा हूँ, 10 to 1. ओके, मे बी आई लीव एट 12:30 ऑल्सो. कल संडे इट इज 9 to 12. कल मेरे को कुछ काम है, मे बी आई लीव एट 11. जनरली वी कैन कन्फाइन टू 10 AM टू मैक्सिमम 1 PM. चाहिए तो बीच में मैं ब्रेक भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, सो व्हेन आई विल कंप्लीट हार्डली हर वीक में, हर हफ्ते में मैं तो 5 घंटे लेता हूँ. सो 4 वीक्स, आज का डेट कितना, 17, 25. सो अक्टूबर सेकेंड वीक में इट विल बी खत्म. ठीक है, जस्ट 4 वीकेंड्स आप आओ, मैं तो कंप्लीट करता हूँ. ठीक है. सो नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज द लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज तो आपका कंफर्ट है भाई. ठीक है, मैं तो हिंदी में ले रहा हूँ और आई विल ऑल्सो टीच इन इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस. सो एनी स्टूडेंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन एनी लैंग्वेज, आप हिंदी में रिपीट करना चाहे तो आई विल रिपीट यू. इंग्लिश वाला स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू आस्क मी, आई कैन हेल्प यू. लैंग्वेज विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन माय क्लास फॉर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, लास्टली वन मोर थिंग. सी, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? सी, आपको कुछ बेसिक चाहिए क्या? डिजिटल का थोड़ा सा बेसिक, ज्यादा भी नहीं, जैसा नंबर सिस्टम्स एटसेट्रा. इफ यू नो इट, यू विल बी मोर कंफर्टेबल. नहीं है तो भी कोई बात नहीं. दिस इज नॉट ए क्रैश कोर्स, दिस इज नॉट ए रैपिड कोर्स. मैं तो स्पीड नहीं चल रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज आई वांट टू गिव यू द कंटेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो इतना भी स्लो पॉसिबल है तो उतना स्लो आई विल टीच यू, बट यू शुड लर्न, दैट इज माई अल्टीमेट एम. सो इसलिए आपको किसी भी क्लास होने समय पे किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू अप्रोच. आप चार्ट सेक्शन में यू कैन कमेंट, सर ये प्लीज रिपीट करो, इसमें क्या है सर, आई डोंट अंडरस्टैंड. कोई भी डाउट है तो ऑलवेज फील फ्री. ओके, वी विल स्टार्ट स्लो. ओके, टू द फुलेस्ट डेप्थ. बिलीव इन मी, आपको कोई जगह पे इतना कंटेंट तो नहीं मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर में जो कंटेंट मेरा पास है. ठीक है, वट एवर आई विल टीच यू, नॉट इन द इनिशियल डेज, आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट आई विल गिव यू द बेसिक्स टुडे. थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर का टर्मिनोलॉजी आई विल इंट्रोड्यूस. ओके, इसके बाद वी विल स्टार्ट द बेसिक थिंग्स. वंस वी गो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड, अरे भाई इस सब्जेक्ट में इतना है, इतना डेप्थ आई विल टेक यू. ओके, बट बिलीव इन मी, स्टार्टिंग डेज में आपका कोऑपरेशन चाहिए. स्टार्टिंग डेज आप उतना इंटरेस्ट शो करो. जैसा मत सोचना हर दिन पे क्लास, डोंट अटेंड ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन. स्टार्टिंग डे में, स्टार्टिंग क्लास में, स्टार्टिंग 1 hour इटसेल्फ डोंट एक्सपेक्ट द प्रॉब्लम्स. थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट once you start the problems you will understand.
how you learn the thing. So don't worry in this subject to remember anything. Don't remember anything. I will teach you in a systematic way. You will automatically remember. We will do those many number of questions. So आप तो ये मत करना, डोंट, नो नीड टू डू, नो नीड टू रिमेंबर, बिकॉज इस सब्जेक्ट में बहुत बच्चों को दिक्कत तो ये होता है, दे नीड टू रिमेंबर मेनी थिंग्स. देयर विल बी मेनी नंबर ऑफ न्यू टर्मिनोलॉजीज आएगा. आप कोड बोलते हैं, नेमोनिक्स बोलते हैं, इंटरफेसिंग बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, सभी नया टर्मिनोलॉजी आने के बाद we will feel it is a difficult subject. Not at all. It's a very good logical subject. You will definitely learn it. This subject will be helpful for examinations. बाद में आप प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, नहीं तो VLSA पे सेटल होना चाहिए, तो भी learn this subject. It is definitely helpful subject. Okay. So here little नया नया English terminology आएगा. Please never mind about it. Okay, so mnemonics, opcode, okay, what we call assembly language, सभी different different interfacing बोलते हैं, interrupts बोलते हैं, सभी नया नया terminology आएगा. उसको देख के generally your mind will be reluctant. Because of this many people will think this subject is difficult. It is not at all difficult, guys, believe in me. So let's start the journey. So आपके लिए टेक्स्ट बुक्स में रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ. I'm giving you some textbooks for your reference. Okay, fine. If you follow it, it is fine. Just attend my classes. That is more than enough for your examinations. Okay, so 8085 microprocessor and interfacing by Ramesh Goenker. Next, 8085 by श्रीनाथ, IIT कानपुर का प्रोफेसर है. ओके, you can watch these, I mean you can follow this textbook. Otherwise this NPTEL पे IIT मद्रास का 8085 का कंटेंट है. दिस इज द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल. Okay, मैं ये सारे I mean I have gone through all of them and I'll be giving you the best possible content, no doubt in it. But this is the best, don't miss it. Okay, if you want to go to the depth of the subject, you can definitely enjoy this course. It is very good. I'll give you as much as possible, no doubt in it. Okay, so let's move. Generally I will give textbooks. Nobody follows any textbook. I also know that. But मैं तो देना चाहिए formally. मैं तो दिया. Okay, right. So let's start the session now. These are the things we are going to discuss today, and today night is in this course. Right. So आपका ये है content. So syllabus में we will be discussing the basics. Okay. So basic का मतलब क्या? First, I will make you comfortable with the microprocessor. Generally, what happens if you start directly the microprocessor 8085 का architecture लेके मैं explain किया तो देखो architecture दिखाता हूँ. देखो डायरेक्टली ये फिगर लाके मैं एक्सप्लेन किया तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स नोबडी कम्स टू माय क्लास. ठीक है, सो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट आई विल गिव यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर का मीनिंग क्या, इसका रिक्वायरमेंट क्या, ये सभी चीज में इंट्रोडक्शन का बेसिक्स में देता हूँ. ओके, देन आफ्टर दैट विल कम टू द आवर माइक्रोप्रोसेसर. इसका नाम है 8085. 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर क्या होता है, इसका पिन डायग्राम we will discuss. Then we will go for the basic terminology like machine cycles, addressing modes, instruction set, then the programming and interfacing of memory and IO. All these concepts we will be discussing. Okay, chalo. So let's move further. The first thing, evolution of processors. ठीक है, processor when it was born and how it evolved, these things we want to discuss. Okay, so you need not remember this, it doesn't matter, but you should know that's all. 1971 Intel introduced its first 4-bit processor.
What is the meaning of 4 bit? I will explain. Please don't worry right now. ओके 1971 पे इंटेल तो इसका फर्स्ट प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द 4 बिट प्रोसेसर. ओके, इसका नंबर नेम तो 4004 आई थिंक. ओके, देन इन 1973 नया प्रोसेसर आया 8008. दिस इज ए 8 बिट प्रोसेसर. इसके बाद हमारा प्रोसेसर आया 1976 बिट 8085. ये भी 8 बिट प्रोसेसर है. इसके बाद पूरा एवोल्यूशन हो गया प्रोसेसर का स्टाइल पे. आप ये बताओ 76 का टाइम मींस 76 मींस अराउंड हाउ मेनी इयर्स का बैक? 45 इयर्स, 46 इयर्स. इतना पुराना है. आई होप nobody was born by this time. Might be you are in the previous जन्म. ठीक है, मैं तो I was not born by this time. I hope you people are also not born by this time, but because YouTube में anybody can come, that is I don't know exactly. But see here, you might get the doubt, sir इतना old processor, why we are studying, sir? Because मेरा पास तो I mean presently Intel Core 2 Duo Core i7 processor आ रहा है, different processors आ रहा है. Why we don't study all those processors? Why we are studying this बहुत पुराने वाले चीज तो 1976 वाले processor तो why should we study now? Please answer my question. Why we are studying this particular processor today? Why this is? Because it is available in your syllabus, as you people knows, right? ये वाला आपका syllabus में है. सभी exams में they are asking 8085. Even in mtechs also, in iits also, this course is still available. What is the reason? Please understand, tell me that. Because before reading anything you should know why you are reading. Okay, please tell me. No need to take the notes, Nomit. Okay, अगर पैरेलल पे नोट्स भी ले लिया तो यू मे नॉट बी एंजॉय एबल टू एंजॉय द क्लास. छोड़ दो. चाहिए तो मैं अलग से देता हूँ नोट्स हमारा अनअकैडमी का कम्युनिटी पेज पे. आई कैन शेयर द कंटेंट, डोंट वरी अबाउट इट. नहीं है तो क्लास होने के बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते. एवरीथिंग इट विल बी लाइक ए नोट्स एग्जैक्टली, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो नो नीड टू राइट द नोट्स. यस, टेल मी. 40 साल के पहले यार, इतना 46 ईयर्स का बैक. यू वॉज नॉट बोर्न बाय दिस टाइम. ओके, बिकॉज ये तो बेसिक. हाँ हाँ, आपकी का प्रोसेसर समझाने के लिए ये पहले वाला प्रोसेसर को पता होना चाहिए. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? राइट, ठीक है. इसके लिए आई कैन रिलेट विथ यू विथ द ट्रांसिस्टर. अरे भाई, ट्रांसिस्टर व्हेन इट वाज इन्वेंटेड, मेरे को आई डोंट रिमेम्बर द ईयर्स. मे बी इफ यू नो यू कैन कमेंट, बट आई होप अराउंड 1950s पे हो गया ना, 54 पे समवेयर अराउंड दैट. आई डोंट रिमेम्बर द ईयर एग्जैक्टली, बट उतना पुराना है ट्रांसिस्टर आपका बीजेटी. बट दोज वी आर स्टडीइंग नाउ आल्सो. बिकॉज अभी तो ट्रेंड क्या वीएलएसए का चल रहा है. ठीक है, एक ही चिप में अनेक transistors are present or MOSFETs are present, whatever it might be. We are still studying the transistor because that is the basic. That is the basic. If you understand that core concept, then only you can understand the remaining things. The same way, 8085 is the first functionally complete processor. Functionally complete. सभी चीज करने वाला first वाला processor क्या? 8085. Why? That's why we are not studying this 4-bit processor. 4004 मेरा हिसाब से नाम ठीक है, और समथिंग एल्स 8085 ओनली. व्हाई यू आर स्टडीइंग फंक्शनली? वो प्रोसेसर का काम जो होता है ना, वो सभी करने वाला फर्स्ट प्रोसेसर is 8085. So if you understand this processor properly, ये वाला प्रोसेसर if you understand in a proper way, बाकी प्रोसेसर believe in me, 1 week पे you can learn the new processor. Every single week you can learn the new processor. Every single week, like uh, if you take hardly just 1 week, if you are able to spend, you can understand the new processor because the basic core concept remains the same. इसके बाद जो मिलते हैं ना, these are developments in that. 86 आएगा, इसमें 16-bit processor, कुछ parallel processing will be coming into the picture. Okay, pipelining comes into picture. Like that, new concepts will come, but this is the core. You should learn this. If you learn this in a proper way, remaining things, microcontroller, embedded systems, all these things you can definitely learn on your own also without any other help. ठीक है, चलो let's move.
So these are the years में कुछ लाया. Don't worry to remember even 1 year of this. आप इसमें ये एक लाइन भी याद मत करना, याद करना ही नहीं चाहिए. ओके, सो बिकॉज व्हेन आप लोग टेबल देखने के बाद इमीडिएटली आपका माइंड पे ये आएगा, अरे सर इतना याद करना क्या, कुछ नहीं. ओके, डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग. सो लिसन हियर. फर्स्टली 8080 तो 74 पे आया. 85 इन 76, इसमें कितना ट्रांजिस्टर्स है भाई? 6500 ट्रांजिस्टर्स ऑन ए सिंगल चिप. इसका फ्रीक्वेंसी इज अराउंड 5 मेगाहर्ट्ज, एक्चुअली 3 भी है, 325. एंड हियर इट इज ए 8 बिट प्रोसेसर. ठीक है. इसके बाद एवॉल्व हो गया भाई 88, 8286, 8386 पेंटियम वाला. मे बी यू पीपल नोस अबाउट पेंटियम प्रोसेसर्स P1, P2, P3, P4 and so on up to this we went. Okay, इसके बाद भी है बहुत सारे प्रोसेसर. दिस इज द इंफॉर्मेशन अप टू 2009. अभी तो मिलियंस पे चल रहा है ट्रांजिस्टर्स. एक चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर प्रेजेंट एंड वी रीच्ड अप टू गीगाहर्ट्ज. We reached up to gigahertz and current trend is around 32 and 64 bit processors are चल. Okay, so don't think ये सभी चीज याद करना नहीं चाहिए, please. Okay, don't see everything with respect to exam point of view. These are the basics which makes your subject more interesting. Okay, so let's move further. Right, listen here. So these are the different processor. I mean मैं तो data दे रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं. Right, listen here. Firstly, uh, what is the basic काम of the processor? Basic job क्या है processor का, इसके बारे में we will discuss. Okay, we will discuss. It is a microprocessor is just like your brain. It will process all the data. It will do the necessary modification. Okay, so generally what your brain does? आपका brain क्या करते भाई? ओके, डेफिनेटली योर ब्रेन इज गुड. और माइक्रो प्रोसेसर और इंटेल का बेस्ट प्रोसेसर ले लो, इंटेल का नहीं, कोई दुनिया पे बहुत सारे अच्छी प्रोसेसर ले लो. ओके, एंड यू टेक योर ब्रेन इनटू कंसिडरेशन. ओके, अल्टीमेटली विच वन इज द बेस्ट मींस एवरीबडी नोस इट. आई होप योर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज द बेस्ट. अभी तो मशीन लर्निंग का काम चल रहा है. आई मीन मशीन लर्निंग का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी चीज क्या करते बेसिकली, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन. Okay, to make this subject, to enter into this subject, you should know this. Okay, you want to learn abhi to artificial intelligence, microprocessor, everybody what they do is they will try to understand how human brain will work. हमारा brain जो है ना वो कैसा काम कर रहा है, they will understand. इसके बाद they will mimic का मतलब imitate करते. They will design the neuron systems. हमारे पास neurons है ना, artificial neural networks बोलते हैं. जैसा they will try to implement a system which can work just like your human brain. That is what we go for artificial intelligence. Generally देखो भाई, हमारा I mean human brain is definitely something great compared to your what we call microprocessors, whatever we are having. Suppose I give a microprocessor one task. I tell to microprocessor this is A, this is B. It will recognize. But आप लोग ऐसा नहीं. ये को ऐसा डाल दिया भी, you will suppose I write. ठीक है, you can read this. ऐसा नो, आप लोग को ये याद होता है, ये समझ होता है, ठीक है. बट कंप्यूटर मे और मे नॉट अंडरस्टैंड. इट डिपेंड्स ऑन द हाउ यू हैव ट्रेन्ड योर कंप्यूटर. ठीक है. सो इसको डिस्टॉर्ट करके दिया तो भी, बिकॉज यू रिकॉग्नाइज, यू रिमेंबर द थिंग्स बाय जस्ट सीइंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. इसको बोलते पैटर्न. ओके, इसका डायरेक्टली दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स. ओके, यू डोंट थिंक यू आर यूजलेस. हमारा ब्रेन तो बहुत काम करते हैं. इतना दिन से इतना लोग को याद किया, इतना लोग का अलग अलग वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, हमारा वीडियो को रिकॉग्नाइज कर रहा है. आप लोग मेरे को देख के यू अंडरस्टैंड दिस इज शंकर सर. एक बार मेरा फेस देखेंगे तो जिंदगी का कोई भी जगह पे इफ यू सी मी यू आर एबल टू रिकलेक्ट एंड रिकॉग्नाइज. इतना काम आपका ब्रेन पे चल रहा है. हमारा माइक्रो प्रोसेसर इज नथिंग बट टू इमिटेट दिस जॉब, to take the data from the external world, process it, and present to the outside world. This is the basic job of any processor. ठीक है. So let's move further. ठीक है. So basic terminology. चलो
ठीक है. सो डोंट रीड दैट. ठीक है, इफ यू रीड यू लूज द इंटरेस्ट. मेरा मेरा हमेशा में ये बोलना चाहिए, फर्स्ट लिसन टू मी, देन यू कैन रीड इट. ओके. सो बेसिक टर्मिनोलॉजी लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके. सपोज these आर द बेसिक टेक्नोलॉजीज. सो आपका कंप्यूटर जो होता है ना, इसमें सारे चीज होता है भाई. व्हाट आर दे? हार्डवेयर, software, program and instruction. Let me explain you one by one. What is the meaning of hardware, what is the meaning of software, program, instruction, सभी चीज तो मैं explain करता हूँ one by one. So listen here. I will provide you the PDF, no problem. Okay. रिया, मैं तो इसका डिसीजन अभी तक नहीं ले लिया. ओके. सो इसके लिए मूर्स लॉ यू शुड स्टडी इन द VLSA बनर्जी. एक्चुअली मेरा माइक का कुछ दिक्कत है, सो वॉइस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो यार. आज तक मैं कल तक रिपेयर करता हूँ. ओके. सो मैं तो ट्राई किया, मैं तो वो तो काम नहीं किया. सो मैं तो कल तक कुछ अल्टरनेटिव देखता हूँ, तो नहीं है तो नया माइक खरीद करके वापस शुरू करता हूँ. डोंट वरी. ओके. सो इट्स नॉट वर्किंग समहाउ, सो मैं कुछ ब्लूटूथ से ले रहा हूँ. ओके. चलो लेट्स कंटिन्यू. ओके. सो लिसन हियर. सो व्हाट इज द बेसिक टेक्नोलॉजी? हार्डवेयर का मतलब क्या? हार्डवेयर का मतलब जो चीज फिजिकली अवेलेबल ना, आपको फिजिकली व्हेन व्हाटएवर इट इज विजिबल, ऑल दिस कम्स अंडर हार्डवेयर. ठीक है. सो आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका कंप्यूटर, कुछ भी ओके फिजिकली यू कैन टच एंड फील, इसको बोलते हैं हार्डवेयर. ठीक है. देन वन मिनट. Right. Listen here. Then सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स. जैसा एक सॉफ्टवेयर का काम क्या, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है. प्रोग्राम के अंदर क्या होता है सर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. सर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है सर? दिस इज इंपॉर्टेंट. इंस्ट्रक्शन का मतलब इट इज ए बेसिक कमांड टू द कंप्यूटर टू डू ए पर्टिकुलर जॉब. अब कंप्यूटर से बोल रहे हैं, अरे भाई तुम ये काम करो. कौन सा काम? एडिशन करो. How to tell to the computer in a language the computer is able to understand, that is given by the instruction. How the computer is able to understand your language, sir? Listen carefully, let me explain this. So what computer will understand guys? कंप्यूटर को क्या समझ होता है आपको पता है? कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड. टेल मी. कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या? इस भाषा में बोले बोलो भाई कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ भाषा है क्या? कुछ लैंग्वेज है क्या वेयर कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड द थिंग्स? प्लीज टेल मी. Tell me the thing, tell me the language which the computer can understand. Binary? Yeah. It may get private, Himansh. Okay. Binary means ones and zero. Computer understand ones and zero. Can anybody here tell me how computer understand ones and zero? मैं तो 10101110 बोला तो computer will understand that. Tell me how computer understand your ones and zeros. How computer understand ones and zeros? Listen, I will take one example. Okay, with the help of this example, I will explain very clearly how your computer is able to understand ones and zero. Many people will say computer understand ones and zero. Computer का machine language का मतलब one and zero, one and zero, one and zero. But how this computer will understand this ones and zero? Nobody explains that. Many from बचपन से हम तो we grow up like that. We learn that computer understand ones and zeros, but it doesn't understand. Okay, it doesn't understand anything. What happens? I will tell you. See here. Let me show, suppose a part of a computer. Okay. For example, I have made one code like this: addition, subtraction, multiplication, division. I am designing a computer which can do all these operations. So for this, I will make a code. कौन सा कोड देता हूँ? 00 01 10 11. Okay. So to operate, to do this operation, I can select some registers or some memory blocks. Okay, I want to do addition of two memory elements, a subtraction of two memory elements, or division of zero.
So इसके लिए I need to select one thing called register. Register is a memory where I will do this addition. ठीक है, each register को से मेरा पास A B C D E F G H मेरे पास 8 रजिस्टर्स है. इस रजिस्टर को भी मैं कोड दे रहा हूं. नाम है, कोड का मतलब इसका एड्रेस. ठीक है, ठीक है. सपोज आई हैव गिवन दिस सॉर्ट ऑफ कोड. नाउ लिसन हियर. फॉर एग्जांपल ये वाला कंप्यूटर मैंने डिजाइन किया. Okay, these are the codes for particular operation and particular register or particular location. ठीक है, so please listen here. I want to do I got a code 0 randomly ले रहा हूँ. Okay, suppose this is my machine code. Okay, listen carefully. ये machine code का meaning क्या है भाई? How the computer will understand this ones and zeros means it will give this part to a decoder. A decoder में first 2 bits it will read and it will understand. We will design like that. It will understand whether it is addition, subtraction, multiplication or division. So 01 is indicating subtraction. Then 101 is indicating which particular register here according to my language it is indicating F. 110 is indicating G. So according to this, computer will understand. अरे भाई तुम्हारा काम क्या? Subtract F and G. F से G subtract करो भाई. This is how we are designing the processor. Okay. Why? If you will be a designer in the future, you will be designing the processor, no doubt in it. उस समय पे the basic first thing we decide is we will while taking a processor we'll decide इसको बोलते इंस्ट्रक्शन. और ये जैसा कितना भी कॉम्बिनेशन है उसको इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं. नाउ हाउ टू डिजाइन दिस हार्डवेयर, लेट मी शो यू. ठीक है, सो इसको ले लो D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 जैसा ये मेरा बिट का पोजीशंस. मैं क्या करता हूं D7 एंड D6 को लेके एक डिकोडर को देता हूं. कौन सा डिकोडर? 224 डिकोडर. डिजिटल तो पता है ना डिकोडर का मतलब. ठीक है, इसका आउटपुट में 4 आउटपुट्स है ना. Here I'll connect the hardware for addition. Here I'll connect the hardware for subtraction. Here I'll connect the hardware for multiplication. Here I'll connect the hardware for division. ठीक है, इतना अंदर जाना चाहिए भाई प्रोसेसर के बारे में. यू शुड नो दिस मच डेप्थ. ओके, यू कैन चेक. ओके, यू डोंट गेट दिस एनीवेयर. दिस मच डेप्थ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स ना, देन यू विल गेन मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर इंटरेस्ट ऑन योर सब्जेक्ट. चलो भाई, नाउ लिसन हियर. बिकॉज मैं तो मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट का समय पे एक प्रोसेसर डिजाइन किया, पाइपलाइन प्रोसेसर इन द वीएलएसए वाला. ठीक है, दैट्स व्हाई आई नो लिटिल मोर अबाउट इट. ओके, लिसन हियर नाउ. सो based on this addition, adder or subtractor or multiplication वाला part will be enabled. So now इसको inputs आना चाहिए ना, so we will make it common. For this we give the inputs. Okay, this is how you are designing the things. Now from where you will give the input? From where you will give the input means, now see here you have 8 multiplex 8, what is that, registers. Out of the 8 registers we need to select one register. So इसके लिए we give this D5 D4 D3. थोड़ा सा सोच लो. From out of the 8 registers इसमें we will select one register like this. For this we need one multiplexer. ठीक है, like that you have another multiplexer here. Okay, this multiplexer will be connected to D2 D1 D0. See how the computer का अंदर डिजाइन हो रहा है भाई. आपका चिप प्रोसेसर जो होता है ना, इस ऐसा hundreds of blocks will be there on a single simple chip of your processor. Okay, we are going to discuss that. Now you understand here.
Here actually it will transfer one bit na. This kind of muxes we should have eight muxes, because suppose now how many bits are present. I mean, suppose in this register eight registers are there na. Each register में कितना bits है उतना number of muxes चाहिए. Now you understand this mechanism, what happens, how computer understand. So ये machine language computer को दे दिया मैंने. So these bits will go to this particular locations. जाने के बाद क्या होता है, first it will decide, हाँ अरे भाई अभी क्या करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, समझ हो गया, बिकॉज यहीं पे मेरे को 10 आया मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 01 आया सब्ट्रैक्शन, 00 आया एडिशन. नाउ यहीं पे listen here, you give 001, it will select the 001 पे मैंने according to me it will select the register B. Suppose here I give 010, it will select the register C and do the operation. So this is how the hardware will be designed. And accordingly, your machine language will vary from system to system. It is not the same for all the processor. अंदर कैसा design किया, accordingly this will change. ये तो बहुत rough way पे मैं explain किया to understand how computer will understand your ones and zero. Now is it clear how computer understand ones and zero? Please comment guys. बताओ यार, समझ हुआ आपको कंप्यूटर को वंस एंड जीरो कैसा समझ हो रहा है? Okay, this is how the things work in your computer. Okay, this is how computer will understand your. So to do a basic job, हम कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, that is the basic command that will be in the form of ones and zeros according to the processor you have selected. So this basic terminology, I hope it is clear for everybody. Okay, is it clear? So mux का output will be given to the adder because adder is there, full adder. इसको input होना चाहिए ना. So mux का output will be given to the input of the adder. So which input will go here is decided by the mux. Is it clear, Vishal? It is not about 85. It is about anything. Okay. Comment करो यार, सही है, आगे चल सकते हैं क्या? आगे जा सकते? अरे यार मेरे को आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए. ठीक है. राइट. राइट, चलो चलो चलो. आपका माइंड पे ये होता है, अरे सर ये सभी तो चलिए है, ठीक है सर, एग्जाम पे क्या मिलते हैं सर, आपको एग्जाम पे क्या क्या क्वेश्चंस आता है सर, इस पे जाओ सर सीधा. प्लीज डोंट थिंक इन दैट वे गाइस, यू नेवर लर्न एनीथिंग इन दैट with that mindset. So now we are moving to the block diagram of the microcomputer. Block diagram of the microcomputer. Thank you. चलो भाई. सो दिस बचपन से देख रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम, आई मीन माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, ऐसा नो बचपन से इतने बार देखा हमने. ओके. आजकल स्कूल पे भी ये है, यू विल बी एबल टू लर्न दिस बेसिक थिंग्स. सो बट लेट्स डिस्कस जस्ट 2 minutes. सो दिस इज व्हाट ए कंप्यूटर लुक्स लाइक. कंप्यूटर में फर्स्ट वी शुड गिव इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर से कुछ इनपुट देना चाहिए, कीबोर्ड से, माउस से, पेन. मैं तो पेन से अभी इसको इनपुट दे रहा हूँ ना सर. दीज आर द थिंग्स वेयर यू गेट द इनपुट. देन द प्रोसेसर अंदर से, मैं तो यहीं पे ऐसा लिखा, इंटरनली क्या होता है सर, इट विल टेक इट एंड इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट. ठीक है. सो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है सर, एएलयू. एएलयू का मतलब क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन लाइक दैट, ये सारे काम करने वाला पार्ट जो होता है ना, दैट विल बी प्रेजेंट. कंट्रोल यूनिट. सो इसका काम क्या है सर, अरे सर मेरे पास बहुत सारे डिवाइसेस है अंदर. ओके, बहुत सारे लॉजिकल ब्लॉक्स है, कौन सा ब्लॉक कब काम करना, कहाँ पे काम करना, हु विल डिसाइड, कंट्रोल यूनिट. सभी लोग कंट्रोल यूनिट के अंदर कंट्रोल पे होता है. दैट इज, आई नीड टू सेलेक्ट एडर,
or subtractor, when I should do the addition, when I should display the result, everything should happen on time. Yes or no? So मैं जो लिख रहा हूँ ना, immediately it should display it. ऐसा होना चाहिए, ये काम parallelly होना चाहिए. Those things taken care by the control unit. And to store these results, sometimes computer के अंदर थोड़ा सा temporary memory होता है. Temporary memory is nothing but register. Register, digital circuits you have studied. Register is a basic memory block which contains, it can store n bits of data if you have n number of flip flops. Okay, this is your microprocessor and the memory unit. Okay, to store the result you have, आजकल आपका हार्ड डिस्क जो है ना, that is the memory disk, memory unit. And you will be getting the displaying the result. आप देख रहे हैं ना मेरा जो मैं लिख रहा हूँ आप तो देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप तो सुन रहे हैं. All these are the output units. ठीक है. So माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये है, ये वाला पार्ट, ये सीपीयू जो, इसको एक्चुअली वी शुड कॉल सीपीयू. ये सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एरे, ये सभी चीज को मैं एक ही चिप में डाल दिया तो, दैट इज इफ यू आर एम्बेडेड ऑल दीज यूनिट्स ऑन ए सिंगल चिप, देन इट इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट. ओके, राइट. सो फर्स्टली, सो सीपीयू का मतलब माइक्रो प्रोसेसर, ये सभी चीज जो होता है ना सीपीयू के, एएलयू, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट्स, if all of them are embedded on a single chip, then it is called as a microprocessor. Okay, so listen here carefully. CPU is the heart of the computer. ठीक है, driver of the bus. Okay, whatever you take, you want, you can take it. So heart of the computer CPU है by it contains क्या क्या, ALU, registers and control unit. ALU, register and control unit. Okay, this is generally discussed. One more important thing is also there, इसको बोलते हैं internal bus. ये बस क्या है सर? दिस इज द रीजन आई डोंट स्टडी माइक्रोप्रोसेसर सर. बस सभी चीज तो बहुत, आई मीन कंफ्यूजिंग होता है. बस इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ वायर्स, तीन चार वायर को एक बस बोलते हैं. देखो मेरे पास एक डिवाइस है, ओके, इसको भी बस बोलते हैं. इसमें कुछ वायर्स होता है ना, इसको भी यू कैन कॉल इट एज ए बस. ए ग्रुप ऑफ वायर्स, नथिंग बट ए बस. सो ये सभी चीज को कनेक्ट करने के लिए अंदर कुछ वायर्स चाहिए ना, that is called as a bus. In a technical posh language पे we call it as a bus. Okay, you can call it as a internal wiring वाला part, electrical वाला बच्चों के लिए. ठीक है, this is what we call the bus, is also a part of the CPU. See, it is very important. One of the question appeared in ESC examination recently, I think. Central Processing Unit 2018 ESC पे आया है क्वेश्चन. Okay, Central Processing Unit consists of क्या क्या, ALU control unit registers only, ALU control unit system bus only, ALU control unit registers and also the internal bus. What is the right answer? Now tell me. What is the right answer? Option B. Yes or no? पानी लेता हूँ. So 1 घंटा टाइम तो हो गया. चाहिए तो you can ask me a break. I can give you 5-10 minutes break and I can resume the class. Okay, anytime. ठीक. So CPU का मतलब, this is wrong answer. Okay. So ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर भी है सीपीयू के अंदर, और क्या, इंटरनल बस. ओके, दिस इज गिवन इन ESC एग्जामिनेशन 2018. चलो लेट्स मूव. ओके, हैव यू एवर थॉट this? Okay, firstly, can you read out what is there on my board? Please read what's there, what's visible for you guys. आप प्लीज कमेंट करो यहीं पे आपको क्या दिख रहा है.
the letters you are seeing? Please tell me. Comment. 6 दिख रहा है? ओके, चलो देख के कमेंट करो। इसको क्या बोलते? कैप्चर, राइट? Yeah, and many people are able to happily, conveniently say that V69JBCDS, right? V69JB. So can you tell me why this pattern? Have you ever tried in जैसा हमारा कुछ भी access करने समय पे password enter करने समय पे or when you are taking logging in into any account, they always ask you हमारा IRCTC, SBA सारे websites में they will ask you. Have you ever never thought अरे यार ये लोग ऐसा क्यों टाइप कर रहे हैं? Why can't they type straight away like this? Why they are typing like this? Anybody? Can you tell me the answer? Have you ever thought? आप देखते हैं ना क्यूआर आई मीन कैप्चा एंटर करने समय पे ये तो अलग ऐसा एक जे तो नीचे होता है, वो तो पीछे होता है, बीच में ये लाइंस आती है जैसा इट विल बी ऑलवेज क्लमजी, दे विल शो यू, दे डू नेवर गिव यू द कैप्चा इन दिस वे. यस सर, नो? कैन यू टेल मी व्हाई? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड. क्योंकि द अदर पर्सन, सपोज आप लोग किसी भी शो को वोटिंग कर रहे हैं और कुछ ऑनलाइन पोल पे जाके वोटिंग कर रहे हैं, ओके? इफ ए हैकर डिजाइन लाइक दिस, एक कंप्यूटर को डिजाइन किया, प्रोग्राम किया, फटाफट कंप्यूटर इज गिविंग द ऑनलाइन वोटिंग एंड इट वांट टू मेक वन पर्टिकुलर पर्सन टू विन, ओके? वोट्स बोलते हैं ऑनलाइन पे, ठीक है? सो इसको अवॉइड करने के लिए, I don't want the computer to access your data. Human should access this data. They will make this kind of things because if it is like this also, you will be able to crack this, but computer cannot. That is what I want to say. Ultimately, you should because हम तो initial basic processor discuss कर रहे हैं, अभी तो बहुत आगे गया हमारा world in the era of artificial intelligence. But you should learn this subject and gain the knowledge and utilize it later also. इसलिए मैं तो relate करना चाहिए. So ultimate aim of designing any processor is you should try to reach the human brain. Human brain तक जाना चाहिए. That is, you should be able to try. Okay. Even you are not able to do it, it's, I mean, you will try to reach as much as possible. As suppose here, two things. A programmer will try to design this such that person, human can identify, but computer cannot identify. But a computer designer should try. It should be able to identify everything. Okay, this is what happens. So हमें तो ऐसा डालेंगे तो भी you might be able to still recognize the information available. That is the power of your human brain. ठीक है? That is how you collect your data. So सोच लो ऐसा, how I am understanding this. मैं तो मेरे को याद है, पता नहीं, ठीक है? When you remember V, okay, बचपन से वो रजिस्टर हो गया. सो आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करके वापस बोल रहे हैं यार भाई मैं तो रिकॉग्नाइज किया V, ठीक है? So when you can also try to design a computer which can do these kind of things, you can go to that level. That is the motivation or motto here. But always your human brain is ahead of all these things. Okay, so let's move further, guys. Chalo, let me explain the things. Visible hai kya? Let me check the screen. I don't think it is visible. Okay, no problem. Now it is visible. Okay, अभी तो ये वाला पार्ट तो सही है ना? एक मिनट चाहिए तो आई कैन
June lately. Okay, fine. So microprocessor के अंदर little June. Now it is perfect. अब स्क्रीन पे रेजोल्यूशन तो 1080 रखो यार, इट विल बी मोर बेटर. ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है सर? ऑल दीज का मतलब क्या? ए रजिस्टर, एएलयू, ऑल दिस, ओके, कंट्रोल यूनिट, ये सभी चीज आर एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप, देन इट विल मेक यू ए माइक्रो प्रोसेसर. So the basic, first let us understand ALU, okay, registers, CPU, one by one. So first understand the CPU. ठीक है. So CPU का काम क्या है भाई? See, firstly, when you want to run a program, okay, कंप्यूटर में first thing you should know is, से आपके पास एक प्रोग्राम है, आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहिए. प्रोग्राम कहाँ पे है सर? प्रोग्राम कहाँ पे है सर? प्रोग्राम इज इन मेमोरी. सो आप मेमोरी पे जाने के लिए यू शुड नो, द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन. ठीक है. सो द सीपीयू का बेसिक काम क्या है सर? स्टार्ट होने के बाद it will generate address of the location you should go. This is the first step the processor will do it. Okay. So processor का काम क्या है समझ होना चाहिए. First time explaining the general things, then we go for the 8085. Okay. So listen here. Generate the address. ये फ्लो चार्ट में कुछ बॉक्सेस होता है ना, आई मीन डोंट वरी अबाउट इट. राइट. सो इट हैज जनरेट द एड्रेस, देन उस एड्रेस पे मैं तो गया, मेमोरी के अंदर कुछ डाटा है, उस एड्रेस पे गया, मेमोरी के अंदर कुछ डाटा है. सो फर्स्ट स्टेप आई शुड डू इज आई शुड रीड द इंस्ट्रक्शन. दिस इज व्हाट योर प्रोसेसर विल डू. इट विल रीड द इंस्ट्रक्शन. हाँ भाई, हो गया. आई रेड द इंस्ट्रक्शन. इसके बाद क्या करना? इसके बाद क्या करना? आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन. इसके बाद क्या करना? आई शुड अंडरस्टैंड. इसको बोलते डी कोड. ओके. देन आई शुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन. ठीक है. अरे भाई मेरे को इंस्ट्रक्शन समझ हो गया, इसके बाद क्या करना? अरे भाई, सी फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू द एडिशन, यू स्टोर्ड दिस इन सम मेमोरी लोकेशन. फर्स्ट आई गो देयर, आई रीड द डेटा, देन आई विल अंडरस्टैंड, अरे भाई ये तो एडिशन करना चाहिए. सो इमीडिएटली एडर को एक्टिवेट करता हूँ. कहाँ पे करना, ये सभी को मैं एक्टिवेट करता हूँ, नेसेसरी सिग्नल्स जनरेट करके, देन आई विल परफॉर्म द एडिशन. सो देन आफ्टर दिस you should perform the operation. ठीक है. आपका काम हो गया. देन शो द रिजल्ट्स. इसके बाद अगेन वी गो. इट्स ए कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस. आप तो जनरेट करते हैं एड्रेस, वहीं पे जाके यू विल रीड द कंटेंट, देन यू अंडरस्टैंड द कंटेंट, देन परफॉर्म द ऑपरेशन एंड दिस. सो टेक्निकली इसके लिए नाम है भाई, अभी तो मैं डिस्कस किया ना. ओके. सो टेक्निकल नाम क्या? फेच. फेच का मतलब रीडिंग.
ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फिच, एड्रेस पे जाके रीड द डाटा, इसको बोलते फिचिंग इन कंप्यूटर वाला लैंग्वेज पे। देन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड को क्या बोलते हैं सर, डीकोड। देन परफॉर्म द ऑपरेशन है ना, ये काम कर रहा है ना, इसको बोलते एग्जीक्यूट। देन फर्स्ट आसान भाषा में, देन टेक्निकल लैंग्वेज में, देन राइट द रिजल्ट्स, मेमोरी राइट बोलते हैं। ओके, so these are the steps involved while executing one single instruction in the processor, and these steps will be continued, repeated. Okay, so these are the, this is the technical name for understanding. Okay, see here, memory के अंदर, for example, this is your memory. Okay, this is your address of the memory. Okay, so memory के address के अंदर, for example, address is hexadecimal में numbers address will be 2000, 2001, like that, some random numbers. इसमें मैं code लिखा, code is machine code, you know the meaning of the code, how code is generated by this time. So computer क्या करते हैं, first I should generate the address, then computer के अंदर we will go to that particular memory address, then what we do is we should read the instruction, then understand, don't read under understand separately, मेरे को जगह नहीं, ठीक है, understand, then perform, then store the result, store or display the result. Now इसका टेक्निकल नाम ही है भाई fetch, decode, execute and memory. These are the basic technical terms where how the computer will perform the things. Okay, this is the job of the CPU. ओके, सीपीयू का काम तो ये है, बट ये काम करने के लिए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इट विल फॉलो, बिकॉज कहाँ पे कौन सा डिवाइस को एक्टिवेट करना, कौन सा डिवाइस को डीएक्टिवेट करना, बिकॉज while fetching my adder should not be activated, while decoding decoder should be activated, then decoder का output should be given to a corresponding device, that device will be activated, and memory writing समय पे ये सभी deactivate करके I should store the result in the memory, that bus will be activated. So ये काम सारे काम कौन करते भाई, आपका सीपीयू, आपका सीपीयू. सो वी आर गोइंग टू सीपीयू, वी आर गोइंग टू सी अंदर सीपीयू के अंदर क्या है देखते भाई, दैट इज योर 8085 प्रोसेसर. बट फर्स्ट थिंग इज वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, सीपीयू का मतलब क्या, सीपीयू का काम क्या, सो कैसा करते, ये बेसिक चीज आपको पता है तो देन इट विल बी बेटर, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ए प्रॉपर वे, दैट इज माय इंटेंशन. ओके, चलो लेट्स मूव. ओके, सो क्या करते भाई, इट विल परफॉर्म. सो सीपीयू का फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज दैट, लेट्स नाउ गो बैक एंड रीड द थिंग्स. सो द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सीपीयू क्या क्या, इट विल जनरेट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते डिकोड, perform the operation, so इसको क्या बोलते हैं, execute, then it will perform arithmetic and logical. So I mean performance का मतलब यही पे it can do arithmetic operation, logical operations. Okay, different different काम कर सकते हैं. एंड इसके बाद सीपीयू क्या करते भाई, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट एएलयू और क्या, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड टेम्पररी मेमोरी, to store the results it will provide the temporary memory, and it will generate the necessary control signals so that every device will be working under the control of your CPU. ठीक है,
So when a particular device is to be on, off, all these are decided by the CPU. Okay, so that is about your basic about the CPU. ठीक है, चलो let's move for the next. Right, listen here. Let me, क्या हुआ? IO devices, ठीक है, IO devices. Okay, input device का मतलब क्या, output device का मतलब क्या, these are IO का मतलब, see many people will get the confusion because of the terminology in your microprocessor. So IO interfacing बोलते, IO का मतलब ही पता नहीं लोग को, ठीक है, understand that IO का मतलब क्या, input output devices. जो डिवाइसेस से हम इनपुट देते हैं ना कंप्यूटर को, इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस. जो डिवाइसेस पे हम आउटपुट लेते, दैट इज वी सी, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट्स, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस. ओके, these are used to input प्रोग्राम. और आप एग्जांपल दे दो इनपुट डिवाइस का, मतलब इनपुट डिवाइस का एग्जांपल दे दो. और डेटा टू कंप्यूटर. और यू कैन से सीपीयू. ओके, सो एग्जांपल क्या, एग्जांपल आपका माउस, मेरे हाथ में जो है ना ये भी इनपुट डिवाइस, आपका कीबोर्ड, ये सभी आपका बेसिक एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. अभी तो आउटपुट डिवाइस के बारे में. ओके, आउटपुट डिवाइस. ओके, आउटपुट डिवाइसेस are used to display or monitor your results. So मेरा स्क्रीन, आपका मेरा आउटपुट डिवाइस है, मेरा स्क्रीन. ओके, दिस इज एन एग्जांपल. ओके, आपका डिस्प्ले यूनिट, साउंड वाला स्पीकर्स, ओके, एंड प्रिंटर, ये सभी चीज आपका आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, चलो लेट्स मूव. So these are the input devices. Example के लिए दे रहा हूँ कीबोर्ड, वेबकैम, ओके, जॉयस्टिक, आप खेलते हैं ना गेम्स, ओके, आपका स्कैनर, बारकोड स्कैनर, ओके, ये सभी चीज, आप ऑप्टिकल पेन, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस. एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या, हेडफोन्स, ऑल दीज थिंग्स, प्रिंटर एटसेट्रा, दीज आर कॉमन फॉर बोथ. जैसा कैमरा पे डिस्प्ले भी है आजकल, आप कैमरा को देख सकते, कैमरा से आई मीन यू आर गेट रिकॉर्डिंग, दैट इज यू आर टेकिंग द इनपुट to the system, and you can also parallelly watch the result. Okay, right, pen drive में you can read or you can write the things. Okay, all these are comes under मेरा टच स्क्रीन. अभी तो मैं इस पे इनपुट ही दे रहा हूँ, आउटपुट भी देख रहे हैं आप लोग. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ IO डिवाइस, कॉमन फॉर बोथ. चलो, राइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ मैं तो क्या बोला आपको, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वंस एंड जीरोस, राइट. सो कैन यू राइट द प्रोग्राम विथ वंस एंड जीरोस? ऐसा है, मेरा मेरा स्क्रीन देखो.
Okay, can I? Is it possible to write a program in this fashion? Comment here. Is it possible? Matrix. ओके समटाइम्स कमांड मोड पे जाके देखो ऐसा वंस एंड जीरोस आपको स्क्रीन पे भी मिलते हैं भाई ठीक है राइट राइट सी हियर हाँ इस लाइन पे गलत हो गया ये वन का जगह पे जीरो लिखो भाई दैट इज द टास्क गिवन टू यू देयर विल नॉट बी एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन दैट केस ओके वो तो सभी लोग साइंटिस्ट होती है ठीक है इट इज वेरी आई मीन इट इज I'm not saying it is impossible. It is very difficult to write the program in this ways of ones and zeros because you understand, computer understand ones and zeros. But हम लोगों को लिए अलग लैंग्वेज है ना इंग्लिश में बात करते हैं हिंदी में बात करेंगे तो इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस ठीक है इसके लिए we go to the programming other than the machine language इसको बोलते हैं assembly language and high level language इस वाला कोर्स में we are going to discuss about the language called as assembly level language हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हमारा सी लैंग्वेज जावा ये सब कम्स अंडर हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इज दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस 8085 का असेंबली लैंग्वेज 86 ये सभी प्रोसेसर डिपेंडेंट जो होता है ना इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज ओके वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट द प्रोग्राम इन दिस वे सपोज कुछ दिक्कत इट इज अ ह्यूमन नेचर कोई भी कोड लिखने समय पे गलत तो होता है भाई वो गलत को मॉडिफाई करने तो आइडेंटिफाई डीबगिंग बोलते हैं बग का मतलब मिस्टेक डीबग मींस यू आर आइडेंटिफाइंग एंड मॉडिफाइंग द मिस्टेक करेक्टिंग द मिस्टेक ठीक है सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डीबग व्हेन यू हैव this kind of code. It is in during my Mtech in IIT, I have done some programming with ones and zeros. Okay, it is one of the assignment for us. इट इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग आपके पास एक शीट है तो देख के कर सकते बट इट इज नॉट कन्वीनियंट बोलना चाहिए ठीक है सो लिसन हियर ठीक है इट इज डिफिकल्ट टू राइट और अंडरस्टैंड राइट के प्लेस में डेवलप बोल सकते एंड ओके डीबग डीबग का मतलब क्या आइडेंटिफाइंग टेस्ट बोलते ओके द प्रोग्राम इन machine code so we write program in a simple language and we use a converter to convert the program I mean to convert into machine language machine language का मतलब क्या ones and zeros so what are they guys okay one among them is assembly language okay and the second one is high level language okay here we use the converter called assembler
here we use the converter called interpreter और कंपाइलर बोलते हैं. सी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है ना, टर्बो सी जैसा. दिस इज द कंपाइलर which convert this into machine language so that your computer is able to understand. Understand का मतलब कुछ नहीं, 1 and 0 देके we activate, we make the internal gates to on and off. Basically काम क्या, to turn on the transistor, turn off the transistor. आप एक input command दे दिया तो just to do that particular job, millions inside the chip, many number of transistors will be on, many number of transistors will be off to display a simple result. Okay, please understand that. Chalo. So this is the what we call happens. Assembly language में का मतलब क्या? It contains okay English like words. इसका नाम mnemonics बोलते हैं. नया टर्मिनोलॉजी आया, ठीक है. हमेशा माइक्रो प्रोसेसर में दिक्कत तो ये है, keep on coming the new terminology. Okay, that is the only difficulty, otherwise it is a very easy subject here. Okay, high level में इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होता है, लाइक इफ एल्स, if x equal to 0 do this job, नहीं है तो do this job. Might be in the C language, you might have seen that already. Okay, so here you will be getting say move a comma b, this kind of instructions will be there. Okay, in the assembly language, these are the two different ways you can write the program other than the machine language, because machine language will take, machine language में you will be having just ones and zeros. The program is made of ones and zeros. Is it clear? The basic three languages computer को हम input दे सकते. Whatever the language you give, internally it is always, आप कोई भी language दे दो, internally it is always converted into machine language. But हम के लिए, human के लिए ये दिक्कत वाला बात है, इसलिए हम क्या करते, हम इसको converter use करके we will do the conversion. Is it clear up to this? Very good. Arvind Reddy, मेरा हिसाब से I want maybe for 2 days this might be available. After that I may keep it private to make you sincere, to make you people to study properly. I want to take the decision. इसके बारे में tomorrow I will update you. But please try to attend regularly. Okay. चलो, 1 more hour I will take the class and I will end the session. ठीक है. चाहिए तो आपको मैं ब्रेक भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं. Okay. So let's move further, guys. So you understand, this is the converter. Assembler क्या करते हैं, it will convert the assembly language to machine language. Interpreter और compiler क्या करते हैं, high level language to machine language. Okay. Assembler converts okay assembly language to machine language. ठीक है. What is that? Compiler convert okay high level language to machine language. बस ठीक है. These are the basic things you should know. Right, let's move further. So basic some content दिया मैंने, दे रहा हूँ मैंने. So compiler और interpreter के बारे में nothing great here, just I mean
दोनों का काम क्या है? टू कन्वर्ट, डोंट रीड दैट, दोनों का नोट्स पे मिलेगा। दोनों का काम क्या है? टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या? जैसा सी लैंग्वेज एक्सेट्रा जो होता है ना, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों चीज आपको हेल्प करेगा। सो इंटरप्रेटर तो स्टेटमेंट जैसा वन स्टेटमेंट एट ए टाइम इट विल डू, लाइन बाय लाइन करते हैं। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है। सो इंटरप्रेटर यूजुअली टेक्स द लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड, ओके। सो दिस इज द बेसिक, यू कैन आई मीन नो नीड टू वरी मच अबाउट इट, बट ये तो सीओ पे आएगा। माइक्रो प्रोसेसर कोर्स में दे नेवर आस्क दिस, बट आई हैव केप्ट इट जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चल, राइट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। मेरे पास स्पेस नहीं है, वेट, जूम आउट करता हूँ। लिसन हियर, basically the converter is nothing but one program which will convert this. It is just a software, okay. This is your compiler, and this is the interpreter, okay. And the machine language, what is that? Assembler, ठीक है। सो ये कंपाइलर का काम क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट विल कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो दिस इज द सॉफ्टवेयर, बोथ ऑफ them same, but it will convert entire program here line by line, okay. So here assembler क्या करते हैं? assembly language program को machine language में convert करते हैं, okay. So now listen here, this is a very basic, right? One more thing. Mhm. Let's have a discussion, change करता हूँ background. देखो, okay, I'll give you some inputs. Suppose it is the machine language, assembly language, then high level, okay. इसमें फर्स्ट थिंग यू शुड नो, प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? प्रोग्राम कंटेन्स व्हाट? मशीन लैंग्वेज में वंस एंड जीरोस, ठीक है, ओके। असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक्स, नेमोनिक्स आर नथिंग बट कोड्स, ओके।
जैसा add sub mul like this you will be having. Okay, here English like statements, it doesn't mean that इसमें सारे इंग्लिश में बात करें, अरे भाई कंप्यूटर भाई तुम ये a plus b ऐड करो, what is the answer, it is not that way. You should give in a proper syntax. Okay, इसलिए इंग्लिश जैसा statements, not in a proper English में please add these two numbers यार, कंप्यूटर को सुन के it will not do that. आपको आजकल वॉइस कमांड्स चल रहा है, काम भी हो जाएगा, that's a different case. So this is the first thing. Okay, प्रोग्राम के अंदर क्या होता है. So इसमें the next point is, if you want to writing the program, okay, ये तो difficult है भाई, definitely ये तो moderate, relatively easy. It is not that programming is very easy. Relative to previous two, it is easy. Comparatively, compared to the previous two, it is easy. Okay, इसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है ना फास्टर होता है, बिकॉज इसमें कोई कन्वर्शन नहीं है. ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर. मीडियम, because of here the process involved, it is slower relative to each other we are speaking, relative to each other. So here the program का debugging वाला part, debug का मतलब क्या, एरर्स को डिटेक्ट करके करेक्ट करना वाला पार्ट को टेक्निकल लैंग्वेज है debug का मतलब. ओके, इज इट क्लियर. सो debug इज, इसमें बहुत डिफिकल्ट है भाई, it is medium here also, relatively easy. Okay, relatively easier. Okay, listen here. इसमें कुछ ट्रांसलेटर चाहिए क्या, ट्रांसलेटर और कन्वर्टर चाहिए, नो नीड. इसमें क्या चाहिए मेरे को, असेंबलर चाहिए, इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर. राइट, द नेक्स्ट वन, lastly, it is machine dependent. Machine language 100% dependent on the machine. इसका मतलब क्या, the program you write for 8085 is not valid for 8086, not valid for some other processor. The same is true for this one also, that is assembly language. But हमारा high level language is not machine dependent. आप C language में एक program लिखो, आप कोई भी कंप्यूटर में डालो, ये तो काम करेगा, आपके पास कंपाइलर होना चाहिए बस. ठीक है. So that is what the meaning of the machine dependent. So it is more convenient to write the program in the assembly language, but sometimes we go for the machine language because you can इसमें you can deal with the internal memories. I mean, while discussing the assembly language program, I'll explain its advantages a little later, because if I explain now also, you may not be able to understand it properly. Okay, so let's move further. So that is the introduction. Now हमारा हीरो इंट्रोडक्शन तो हो गया. ओके, अभी आपका मूवी पे हमारा हीरो तो आ रहे भाई. हमारा हीरो का नाम क्या बताओ. हाँ, ब्रेक लेना चाहिए. ठीक है, मैं भी ब्रेक लेना चाहिए. 11:40 हो गया, 11:45 पे वापस आओ. ओके, 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, बताओ. नौमित, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए और 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, बताओ. लोग तो ऑलरेडी ब्रेक ले रहे हैं. ठीक है, 5 मिनट का ले लो, मैं वापस आता हूँ. Okay guys, I'm back.
ओके, ब्रेक इज डन। क्या किया ब्रेक में? मैं तो नाश्ता खा के आया। ओके, कम बैक यार। पानी का है, पानी दिया। ओके, बाकी लोग तो कहाँ पे यार। ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा होता है, 15 मिनट का ब्रेक ब्रेक है तो बहुत लोग हाफ एन आवर के बाद ही आती है। ठीक है, गुड। ठीक है, 12:30 12:40 ऐसा आसपास में मैं छोड़ता हूँ क्लास। हार्डली 45 मिनट्स 50 मिनट्स लेता हूँ। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। सो अभी तक इंट्रोडक्शन हो गया भाई, एक पार्ट ऑफ द फर्स्ट बेसिक्स ऑफ द, दैट इज हमारा डिस्क। सो हमारा मूवी पे ये वाला पार्ट हो गया। Okay, so now we are going to enter for the second phase, that is हमारा हीरो के बारे में। हमारा हीरो अभी आ रहा है, ठीक है। इसके पहले केवल इंट्रोडक्शन हो गया, हीरो का बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द प्रोसेसर 8085, ठीक है। इसके बारे में लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। Mm-hmm. 8085 microprocessor, ठीक है। 8085 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, इसके पहले आई फील, एक मिनट इसके पहले, जस्ट ए मिनट। या ये तो हो गया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस तो हो गया, बट ये वाला चीज तो बाकी है ना, थोड़ा सा देता हूँ, जस्ट वन लाइन रिगार्डिंग द मेमोरी आल्सो दिया तो इट विल बी कंप्लीट ना। सो मेमोरी is used to store data, program और रिजल्ट्स, ये सभी सेव करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए। मेमोरी इंटरनल होता है ना कंप्यूटर को, ये जनरली रजिस्टर्स, ओके, दोज आर टेम्पररी। परमानेंट मेमोरी एक्सटर्नल होता है, दैट इज योर रैम, रोम, ओके, वॉट एवर यू हैव, राइट। You can have RAM, random access, or the ROM. This is the permanent memory, temporary memory, ये सभी चीज अभी तो बात नहीं करते, बाद में we will be discussing separately. चलो let's move. Right, listen here. Right. So listen here, these are the basic details about your 8085 microprocessor. Listen carefully. 8085 में जो आईसी है ना, इसके अंदर 40 पिन है भाई। 40 पिन भी आप, आई विल एक्सप्लेन, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। सो इसमें, अरे कहाँ गया,
अभी तो विजिबल है ना? ठीक है, राइट। सी हियर 8085 40 पिन का आईसी है भाई, इसके अंदर आई मीन इस आईसी में 40 पिन है। इसमें 27 पिन्स विल वर्क लाइक आउटपुट, बाहर देने वाला सिग्नल्स है। 21 इनपुट, अंदर लेने वाला सिग्नल्स है। ओके, सो आपको कुछ डाउट हो सकते हैं, सर टोटल तो 48 हो रहा है ना, 40 पिन से बोला आपने, 8 पिन्स वी टेक कॉमन फॉर बोथ द इनपुट एंड आउटपुट। आपके इनपुट और आउटपुट के लिए व्हाट वी कॉल वॉल्यूम लो। ओके, मे बी मेरा एनर्जी हो गया भाई। राइट, सो राइट, लेट्स डिस्कस। ओके, सो 8 पिन जो होता है ना, 8 पिन कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, इट विल बी 8 पिन्स विल बी कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, दैट वी विल डिस्कस। सो इट इज बेसिकली मेड विद द टेक्नोलॉजी जैसा पीमॉस एनमॉस सीमॉस यू स्टडी इन द डिजिटल सर्क्यूट्स ना, लॉजिक फैमिलीज में, दिस इज मेड विद द एनमॉस टेक्नोलॉजी। ओके, एनमॉस वाला टेक्नोलॉजी से बनाया ये वाला चीज। ओके, देन राइट, सो क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 3 मेगाहर्ट्ज। अभी देखो 3 मेगाहर्ट्ज। ओके, सो इसका टाइम पीरियड कितना, 1/3 इंटू 10 पावर 6, so 1/3 microseconds, this is the speed it will operate। अभी तो क्या, गीगा हिट्स नैनो सेकंड में चल रहा है काम। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर का आप कि कोई भी शॉप पे जाके प्रोसेसर खरीदने समय पे क्या देखते हैं, अरे सर मेरा डिवाइस अच्छी से दिख रहा है, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप का कलर सही है, ये देखते नहीं। स्पेसिफिकेशन पे एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन आपका क्लॉक फ्रीक्वेंसी। क्लॉक फ्रीक्वेंसी अभी तो प्रोसेस चेक करो, 1 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज ऐसा होता है, सो गीगाहर्ट्ज में है प्रोसेसर। ओके, so present current trend पे means the time it operates will be depending on this clock frequency। so कोई भी काम के लिए कंप्यूटर will tell, अरे मेरे को ये काम के लिए इतना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, n नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। तुम थर्ड क्लॉक में ये काम करो, फोर्थ क्लॉक में ये काम करो। सो ये सभी चीज को सिंक्रनाइज करने के लिए वी नीड द क्लॉक एंड the rate at which operate it is given by the clock frequency। clock frequency ज्यादा है तो it will be more faster। इसका मतलब मैं इसमें एक अच्छी सी ऑसिलेटर लेके गीगाहर्ट्ज वाला ऑसिलेटर को कनेक्ट किया तो will this 8085 प्रोसेसर will work? नहीं, नहीं। ओके, बिकॉज कितना स्पीड में इट कैन वर्क इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इंटरनल व्हाट वी कॉल आर्किटेक्चर। जैसा हमने फ्लिप फ्लॉप्स डिजाइन करने समय पे वी स्टडी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच यू कैन अप्लाई, you operate this counter, these things we study na, same way this clock frequency will be decided based on the internal architecture। चलो, now इतना नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, पावर सप्लाई कितना चाहिए, 5 वोल्ट। ठीक है, सो इट हैज ए 8 बिट डाटा बस, 16 बिट एड्रेस बस। फर्स्ट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी। ये वाला टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। आई विल ट्राई यार, आज नहीं है तो कल देता हूँ, ठीक है चित्रंजन, इज इट ओके? सो 20 लोग तो ब्रेक देने के बाद वापस नहीं आया यार, वो लोग तो गया, कहाँ पे गया पता नहीं। ठीक है, चलो, now let us understand 8085 processor। Okay, here 8085 is a 8 bit processor। So initially ज़्यादा धीरे होता है भाई, once we get the what we call comfort level, इसके बाद we will start the problems। Okay, right, now listen here, 8 bit processor है because its data bus is 8 bit। that bus का मतलब अभी पता है ना, wires। कितना वायर्स है भाई, 8 वायर्स है अंदर। इट कैन हैंडल 8 बिट्स ऑफ डाटा एट ए टाइम, और इट्स एएलयू इज कैपेबल ऑफ डूइंग 8 बिट्स ऑपरेशन एट ए टाइम। ओके, दिस इज द क्वेश्चन मोस्ट फेमस इन, दे विल आस्क यू इन द इंटरव्यू। ओके, इफ द प्रोसेसर इज 8 बिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 8 बिट प्रोसेसर? इसमें 8 बिट क्या, एड्रेस और डाटा? डाटा, एड्रेस कैन बी एनी साइज, इट डिपेंड्स। so this will tell you memory handling capability of the processor।
ठीक है, प्रोसेसर कितना मेमोरी तक हैंडल कर सकते हैं, जैसा हमने बोलते ना मेरा 256 GB, एंड आप मोबाइल खरीदने समय पे दे विल से इट इज हैविंग 256 GB, इट इज एक्सटेंडेबल अप टू समथिंग, जैसा देते हैं ना लोग इंफॉर्मेशन, that is nothing but your memory handling capability, that is given by the memory handling capability. Okay, listen here. So let's discuss that first. For example, ठीक है, suppose this is a memory chip. मेमोरी के अंदर दो चीज होता है भाई. ओके, हर मेमोरी लोकेशन पे हाउ मेनी बिट्स ऑफ डाटा इज देयर, 1 2 3 4. फॉर मी आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 8 बिट्स. 8 बिट्स तो एक बाइट होता है. Now, how many locations are there? So, how to access this location is we take a decoder. You know that basics in studied in the digital circuit. So, इसके लिए we have the address all zeros to all ones. ठीक है? This address will help you to access this location. So, this is the address. इस address में you have the data. Suppose if you have n address lines, we can generate 2 power n number of addresses. आपके पास n number of address lines है तो address lines means this one, okay, number of bits in the address. You can make 2 power n combinations. This will tell you the memory handling capability of the processor. And m data lines, each location, okay, m bits of data. This is the meaning of, this is how a memory chip basic. Okay, now come back. 8085 के बाद प्रोसेसर में you see what is the memory space it is having, 16-bit address. 16-bit address bus means it can access what, how many number of addresses it can generate is 2 power 16 different addresses it can make. 2 power 16 का मतलब 65536, इसको लिख सकते 64K, and these many number of addresses, and each location how many bits, how many bits, how many bits, 8 bits of data. Okay, so total is 64 KB. So this is the maximum memory of 8085. 64 KB, 64 KB इतना कम है आज के दिन पे. एक इमेज को लगेगा भाई 64 KB अभी तो. Yes or no? अभी तो हमारे इमेज भी है 1 MB 2 MB. ओके, इवन इन गीगाबाइट्स आल्सो वी हैव द फाइल्स. ओके, उस समय पे 8085 का समय पे द मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी कितना, केवल और केवल 64 KB. बट दिस 64 KB इज आल्सो इनफ टू डू मेनी वंडर्स. ओके, प्रोग्राम लिखते हैं ना, इसमें ज्यादा मेमोरी नहीं लगेगा. ओके, आई मीन इट कैन डू मेनी मेनी. आजकल एम्बेडेड सिस्टम्स में एक दो केसेस में स्टिल दे आर यूजिंग दिस. ओके, दैट मेमोरी माइट बी सफिशिएंट टू राइट सम कोड. ओके, राइट, चलो लेट्स मूव. राइट, सो नाउ bus structure of 8085.
ये बस क्या है सर, हमेशा आ रहा है। बस का मतलब ग्रुप ऑफ वायर्स। कंप्यूटर के अंदर जो वायर्स होता है ना, वो वायर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं लॉजिकली। कौन सा वायर कौन सा काम कर रहा है, ये वायर इज डूइंग दिस जॉब, दिस वायर इज डूइंग दिस जॉब। ऐसा 8085 contains three buses. 8085 contains three type of buses. First one is data bus. डाटा बस तो साइज कितना, 8 बिट, एंड इट इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या, यू मे रीड द डाटा राइट द डाटा, सो दोनों तरफ से डाटा जा सकते आ सकते, ठीक है। बट द नेक्स्ट वन, एड्रेस बस। एड्रेस बस is 16 bit. It is unidirectional because we give the address but we don't read anything from the address, we just give the address to the memory chip, वहीं से we read the data, इसलिए address तो unidirectional। there is something like control bus, it can be any direction, it depends on the particular signal, some are in some are out। control bus to group of lines, some might be in some might be out, okay, we will discuss that। so these are the different buses available with the 8085, okay। now we will discuss about one by one all the buses, okay। address bus का मतलब क्या, data bus का मतलब क्या, all these things we will discuss, okay। so generally suppose आपने एक मेमोरी एक्सेस करना चाहिए, तो मेमोरी के फर्स्ट वी गिव एड्रेस, देन उस एड्रेस में जो डाटा होते हैं ना, दैट विल बी रीड और राइट विद द हेल्प ऑफ डाटा बस, ठीक है। बस का मतलब ए ग्रुप ऑफ वायर्स, नथिंग ग्रेट, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो आई थिंक इट इज विजिबल और नॉट, नाउ इट इज विजिबल राइट। प्लीज लिसन हियर, लेट मी एक्सप्लेन द डाटा बस का मतलब क्या, ओके। डाटा बस का मतलब क्या, द प्रोसेसर लेंथ, that is you say 8 bit processor, 16 bit processor, 32 bit processor। here 8085 में 16 bit address है, 8 bit data है, what is its processor, is 8 bit processor or 16 bit, 8 bit। so listen here, so the processor length, that is the data handling capability of the processor, is decided by whom, is decided by the data bus of the processor। data bus of the processor will decide the processor का data handling capability, processor length, okay। so n bit processor आपके पास है, तो it can access up to n bit of data, it can process up to n bit of data, or its ALU is capable of doing n bit operations at a time। से मेरा processor 8 bit है, it can add 8 bits of data at a time, it can multiply 8 bits of data, or it can handle 8 bits of data at a time, that is the 8 bit processor ka meaning। so 8085 data bus is 8 bit, bidirectional, and it is multiplexed with the lower address of the, to save the number of pins। so the last point needs some explanation compulsory, yes or no? I will explain, listen here। total how many pins are available, 8085 में how many pins are available, tell me, how many pins are available in 8085, comment here, how many pins are available, 40 pins, right। for 40 pin पे you need 16 pins for the address, 8 pins for the data, total how many, 24 pins गया। मेमोरी के लिए दो, पावर सप्लाई के लिए 2 पिन चाहिए, एंड ये क्या बोलते हैं, क्लॉक के लिए 2 पिन चाहिए, सो ऑलमोस्ट 30 पिन्स आर डन। रिमाइनिंग 10 पिन्स में यू शुड एडजस्ट इंटरप्ट कंट्रोलिंग एवरीथिंग, कोई भी सारे जॉब्स बाकी पिन्स पे करना चाहिए, ये तो मुश्किल होता है। सो इसलिए यू कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ पिन्स, बिकॉज ये तो हार्डवेयर पर्सपेक्टिव है,
ठीक है। अवेलेबल पिंस को इफेक्टिवली यूज करने के लिए ये कंप्यूटर डिजाइन वाला काम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लेक्सिंग यूज किया। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या सर? अरे भाई आप तो मूवीज देखते हैं ना, जैसा मल्टीप्लेक्स मूवी हॉल पे क्या होता है सर, एक ही थिएटर में मॉर्निंग शो पे यू विल गेट वन मूवी, मैटनी पे अनदर मूवी आती है। ओके, सो नंबर ऑफ द, सपोज यू हैव ए थिएटर वेयर you can have some 4 shows per day. You cannot run the same movie for 4 shows. You don't have those many number of people who are coming for that. So they will share the things. सेम ही हॉल, सेम हॉल होता है, इसमें मल्टीपल मूवीज होता है, ठीक है। द सेम वे एक बेसिक चीज तो ये है, when you are accessing the data from the memory, when you are accessing the data from the memory, फर्स्ट हम क्या करते, एड्रेस देते हैं। एड्रेस देने के बाद वहीं पे जाके हम डाटा को लाते हैं भाई, ठीक है। ये तो सीक्वेंस है भाई, फर्स्ट वी शुड गिव द एड्रेस, देन वी शुड टेक द डाटा फ्रॉम द एड्रेस। सो फर्स्ट वी शुड गिव द एड्रेस, देन वी शुड टेक द डाटा फ्रॉम द एड्रेस। सो ये दोनों काम एक ही समय पे नहीं हो पाएगा, ये दोनों काम एक ही समय पे नहीं हो पाएगा। दीज टू थिंग्स विल नॉट हैपन एट द सेम टाइम, they will happen in a sequence, one after the other. So there is no need, we need not have a separate bus for address and data. We don't need to have a separate bus for address and data. We can keep the same lines and use them for address and data also. First you keep the address, then you go to that location, then keep the data. That is sufficient, because address and data will not come at the same time from the processor. फर्स्ट एड्रेस आएगा, इसके बाद वहीं पे डाटा आएगा। सो ये दोनों का गैप जो है ना, दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द पर्सन हु हैज डिजाइन्ड दिस हार्डवेयर। सो व्हाट ही हैज डन, he has multiplexed, what the designer क्या किया, मल्टीप्लेक्स किया। ओके, मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या, आई विल एक्सप्लेन। लाइक इसका मतलब तो वे कॉमन सिंपल थिंग है, मेरा पिंस तो सेम ही होता है। whenever there is a need I will use for address, whenever there is a need I will use for the data, ठीक है। राइट, वेरी गुड, चलो लेट्स मूव। सो टू सेव number of pins, okay, the 8-bit data bus is multiplexed with, what is that, the lower order एड्रेस बस। बिकॉज एड्रेस बस इज 16 बिट्स ना, इसमें 8 बिट्स को ऐसा करते, द लोअर वाला पार्ट। इट इज नॉट लाइक दैट, आई डोंट से इट इज लाइक दिस ओनली, दिस हैपेंस। मैं तो एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल भी देता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों डिजाइन किया। ओके, सो लेट्स गो। सो लिसन हियर, right, now let me explain about the address bus. So a address bus of 8086, sorry 8085 is unidirectional. Address bus तो unidirectional है भाई, एक आपका कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक। सो एड्रेस बस इज ए यूनिडायरेक्शनल, इट कैन, ओके। एड्रेस बस क्या डिसाइड करते भाई, आपके पास जितना भी एड्रेस लाइन्स है तो उतना साइज ऑफ द मेमोरी यू कैन एक्सेस और यू कैन कनेक्ट टू द प्रोसेसर, ठीक है। मेमोरी हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, डाटा बस, memory handling capability of the processor decided by the address bus. If the address bus size is n bit address bus size है तो ठीक है, it can handle, it can generate, or we can connect up to 2 power n different addresses. We can connect up to 2 power n different addresses, right? So 8085 पे 16 bit size address, so इसका मतलब 2 power 16 65536 different addresses we can connect it. The lower order address bus
is multiplexed with the data bus to save the number of pins. Now I will explain this. Listen carefully. मैं तो explain कर रहा हूँ. Total address is A15 to A0. इसमें A8 से A15 से A8 is one address. It is a dedicated. These pins are dedicated for address only. But last eight pins are common for both address and also data. The last वाला pins जो होता है ना वो तो address और data दोनों के लिए common है भाई. Okay, those are common for both the address and data. Now I will show you how we separate the address and the data. Okay. Let me show you the hardware perspective में how we design this. Listen carefully. ये आपका processor. We use one device. Okay. ठीक है. एक मिनट. अरे यार. ठीक है यार बैटरी लो है तो क्या कर. ठीक है. अभी तो एनालॉग का क्लास है क्या? सैटरडे भी ले रहे हैं सर? संडे तो नहीं लेते हैं ना. कल तो क्लास नहीं होता है. वे केवल वीकेंड है ना मेरे को. नहीं है तो मैं चेंज करता हूँ. कोई दिक्कत नहीं. मैं सर से एक बार बात करके आई विल चेक. ठीक है. टुमारो तो ऐसा नहीं. टुमारो 11 बजे तो छोड़ता हूँ मैंने. ओके. थैंक यू फॉर इंटीमेटिंग दैट. नाउ लिसन हियर. आपके पास 8085 प्रोसेसर. ओके. हियर. लिसन. मेरा 8085 processor. This is the pin we call ALE, address latch enable. I will explain it. So A15 to A0 is independent. AD7 to AD0 is common. Here
I will I need A7 to A0 separately, D7 to D0 separately. How to do it? I will explain it. Listen here. For example, here I'll keep, for example, my address is, समझ होने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरा एड्रेस इज 2345 हेक्साडेसिमल. इस पे ये वाला एड्रेस पे कुछ डाटा है. डाटा कितना से 85, ओके, और 88 ले लो. ठीक है. अभी क्या, मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करते, वी शुड कीप द एड्रेस 2345. सो 23, यहीं पे 45 रखो. नाउ आई यूज वन डिवाइस हियर सच दैट इट विल कॉपी दिस 45 हियर एंड आफ्टर दैट इट विल नॉट रीड दिस इनपुट. इसके लिए व्हाट इज द डिवाइस व्हिच कैन हेल्प यू इज लैच. So listen here. Latch ka enable input I connect to ALE. When ALE is 1, this 45 will be coming here. When ALE is 1, that 45 will come here. ठीक है. इसके बाद मैं ALE को जीरो करता हूँ. ALE को जीरो किया तो enable input of the latch is zero. This input is changed. और input में कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं. This will not come to the output. This will be locked. Now here I will write or I will read whatever it may be the data 88. So this bus will be replaced with 88. Understand now carefully how I am using the same fins for both the address and data. First what I will do, higher address, ये तो higher वाला part, lower वाला part. First two nibbles बोलते हैं, okay, hexadecimal में two numbers is 8 bits. Okay, these 8 bits are as it is. But the lower में क्या करते, first clock में I will keep the address. I will make address latch enable signal 1. Then this latch will copy this address here. हो गया काम. Then I will disable this by making ALE equal to 0. Now I will use these lines for the data. Okay, but the address is already present here with the help of latch output. Because latch को disable किया तो input will not come here. Starting में whatever you give, that will only present here. Anybody have any doubt? Please tell me. This is the multiplexed address. Okay. मेरा चार्जिंग हो गया. मेरा so voice might be low, but I'll try to speak as high as possible. Please don't worry. देखो भाई क्या हो रहा है. Listen carefully. So here initially I'll keep 23 and 45 the address. Then I'll make ALE equal to 1. ALE equal to 1. Then this will come here. इसके बाद मैं क्या करता हूँ? I will make my LE equal to 0. Then this input will not be read. Latch will keep the previous data as it is. Now I will use the same lines for the data. So this is how multiplexed way पे I am using the same pins for both the address and data. ठीक है. Starting पे address देके enable करके with the help of this ALE signal that is used to demultiplex the address and data. Is it clear? A15 to A8. Correct. Thank you. Okay, Mani. We'll plan tomorrow. मैं तो 11:30 पे छोड़ता हूँ. ठीक. नेक्स्ट वीक से 9 बजे शुरू करता हूँ. कोई दिक्कत नहीं. ठीक. चलो. Right. Is it clear? Please comment here. So you can see 8085 में we require 16 bits for the memory location. But for IO that is
See here, computer का output में we can connect two type of things: input output devices or memory devices. Both of them will have the address. For memory, it has 16 bits of address. But I/O devices, input output devices में कितना bits of address है भाई? It can be 8 bit or 16 bit. That we will discuss later. There are different types of connecting the I/Os. I/O mapped I/O बोलते हैं और memory mapped I/O बोलते हैं. तो नाम देख के कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. सो लेट्स मूव फर्दर. सो इज दिस पॉइंट एवरीबॉडी क्लियर? प्लीज कमेंट हियर. अगर आप लोग कमेंट किया तो ओके. कल कल का क्लास टाइम 9 बजे. कल का क्लास टाइम 9 बजे, ठीक है? राइट, दिस इज अबाउट योर एड्रेस बस. The next one, control bus. देखो भाई, थर्ड वाला बस तो होता है, दिस इज द लास्ट 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, डोंट वरी. ठीक है? सो द थर्ड वाला क्या होता है सर? कंट्रोल बस. कंट्रोल बस का मतलब क्या सर? कंट्रोल बस विल जनरेट द नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट ना. वो सिग्नल्स जो होता है ना, वो सिग्नल्स, सम सिग्नल्स विल बी गिवन बाय द प्रोसेसर, सम सिग्नल्स विल बी रीड बाय द प्रोसेसर. So these are the group of lines. Some are out of the processor, some are into the processor. जो out of the processor are called as output lines. Some will be input lines. It depends. So tomorrow we will discuss all these pins. और ये सारे pins के बारे में कल वाला क्लास में we will be discussing. For example, read bar, write bar, ready signal. All these are example. इसके बारे में explanation तो कल करते हैं. ठीक है? So first thing today we have done is मीनिंग ऑफ द बेसिक्स में तो दिया आपको, इंट्रोडक्शन दिया. इसके बाद क्या किया? 8085 का बस स्ट्रक्चर, 8085 का पूरा आई मीन डिटेल्स दिया, बेसिक डिटेल्स. ऐसा चिप में कितना पिंस है, फ्रीक्वेंसी क्या, वोल्टेज क्या, एंड बस साइज क्या. इसके बाद में मैंने क्या किया? then we have discussed the bus structure of the 8085. what is that? एड्रेस बस का मतलब क्या, डाटा बस का मतलब क्या, कंट्रोल बस का मतलब क्या. कल क्लास में we are going to discuss the architecture of 8085. ये वाला चीज जो है ना, इसके बारे में सही से एक्सप्लेनेशन कल करेंगे. ठीक है? tomorrow we are going to discuss this entire figure the best possible way with all these 40 minutes one by one. So don't miss the class tomorrow. Tomorrow's class is very important. entire 8085 वाला कोर्स. ठीक है? So tomorrow, कल कब मिलते भाई? 9 AM. tomorrow Sunday है, but please join at 9 AM. ठीक है? नेक्स्ट वीक से मैं अंकित सर का क्लास देख के चाहिए तो मैं टाइमिंग से एडजस्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है? सो लेट्स मूव फर्दर. एड्रेस बस तो समझ नहीं हुआ, क्या दिक्कत है आपको? क्या समझ नहीं हुआ बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, आई डोंट हैव एनी डिफिकल्टी, प्लीज टेल मी, आई कैन हेल्प यू. ओके. सो क्लास नोट्स के बारे में
मैं हेल्प करता हूँ. सो नोट्स पीडीएफ के लिए टुमारो क्लास भी होने के बाद आई विल शेयर इट इन माय टेलीग्राम चैनल, क्रिएट्रिक्स टेलीग्राम चैनल, अनअकैडमी कम्युनिटी. ये सभी जगह पे मैं देता हूँ नोट्स. यू कैन हैप्पीली रीड फ्रॉम दैट. ओके, मैं नोट्स देता हूँ, कोई दिक्कत. ये सभी चीज कल क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, ऑल द लॉजिकल थिंग्स विल. एड्रेस बस में कुछ दिक्कत है क्या? देखो क्या बात है, क्या बात है. या प्लीज आदर्श listen carefully. Address bus में, okay, here first thing we give this address to the memory. memory के अंदर ये data we might be reading or we are writing this data. ठीक है. So first step is we keep this numbers. 23 is 8 bits, 45 is 8 bits. It's a hexadecimal number. So this 23 is kept in the higher order by higher order address bus. 45 is kept in the lower order address bus. Then I will enable the latch. Latch is enabled. 8-bit latch. 8 latches. D-bit blocks are there here. This when you enable this 45 will come out of here. That we give for the memory to select the address. Okay. Then I disable it. Once I disable it, what happens? This will not read this input. That is here. Now you change the value also. Your address will not be changed. Address will be as it is. So that's why I disable this. Now I use these same lines for data. Under a lines will be connected to the internal registers. Okay, this is how the address bus will work. Address bus is to give the address to the memory. So first will be dedicated. Second one is common. They are sharing it. Starting with address by address देते हैं. Next data by data देते हैं. They both of them are sharing the same space. ठीक है? ठीक है सौमिक, मे भी सैटरडे संडे का. latch का मतलब लेवल ट्रिगर नहीं है भाई. whenever enable is 1 it will read, enable is 0 it will stop reading. Okay others, others clear. latch का मतलब ही लेवल ट्रिगर. ठीक है, ये सारी चीज तो कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे. So an academic life subscription लेना चाहिए तो you can take it here. Where you get the total material मिलेगा आपको और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा. ठीक है. So this is the present courses running on with Unacademy. नया बैच भी शुरू हुआ 2 दिन के पहले. अब अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो you can take it. So whenever you take the subscription, you can use my code. So Mega comeback exam is also going to Mega comeback is going to happen on this 25th Sunday. So don't miss this opportunity. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है लिंक. Please enroll to that. So guys, हार्डली आपके 6 महीने हैं आपका ड्रीम शुरू करने के लिए. आप इतना हर महीने को खर्च किए तो यू कैन गेट द आइकॉनिक आल्सो वेयर यू कैन गेट 1-to-1 मेंटरशिप. सो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे एडवांटेजेस लाइक टॉप एजुकेटर का क्लासेस मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होता है and you get the printed material if you go for iconic. नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, टेस्ट सीरीज also. It's a complete package for your preparation to the best possible way. Okay, so whenever you want to take the subscription you can use my code Mtech. ठीक है. so आज के लिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ. I have a class again at 1:39. ठीक है. सी मैं तो सिंसियर एफर्ट डाल के आपको कुछ दे रहा हूँ. सी आई डोंट हैव एनी टाइम. यस्टरडे मैं तो आप ही देखा, मैं तो 10:30 बजे तक क्लास ले गया. ऐसा नो. इसके बाद मैं तो अगेन शुरू किया सुबह क्लास. इसके बाद अगेन आई हैव अ प्लस क्लास. सो इतना बिजी समय पे मैं आपके लिए टाइम दे के आपको क्लासेस लेना चाहिए. आप रिटर्न पे कुछ करना चाहिए तो आपका सिंसियरिटी दिखाओ. एज सर वी विल स्टडी रेगुलरली सर. मैं ऐसा नहीं टी पे जो कंटेंट मिल रहा है उसको वैल्यू नहीं करता. You should value this content. इसलिए आप क्या करना, अटेंडेंस दे दो यार. जब बस कुछ नहीं करना. आप हर दिन आके क्लास में बैठो. मैं आपको देख के मोटिवेट होके आपको जितना भी चाहिए उतना दे सकते. So generally I am presently teaching with the network analysis subject. डिजिटल दे रहा हूँ. Okay, I am also teaching analog. Okay,
CO along. Okay, maybe in future I will start the signals and systems communications. ये भी शुरू करता हूँ, ठीक है? ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब में है, नहीं है तो आपका प्रैक्टिस कोर्स, क्रैश कोर्स, एग्जाम समय तक आपको however the ways I can support you, I will support you. What you need to do is show your sincerity, because if you show your need, we always there, you know, the team Kreatryx हमेशा आपको मदद कर रहा है 2-3 साल से. You can ask any other students also, we will do that. Okay, आप क्या करना है, show your sincerity. अरे सर मैं हमको ये चाहिए, हम रेगुलरली आएगा, we are sincere, show that definitely we will give you the best. Okay, so tomorrow 9 a.m. we will meet. Okay, so notes I'll give you tomorrow. Okay, the video might get craving. Okay, soon. So इसलिए please complete the, I mean please try to attend live only. That is the best thing you can do. Okay, so I'll give you the best possible content which you never get anywhere undoubtedly. Okay, thank you. Thank you very much. Right. Okay. See you all. Okay. We'll meet tomorrow at 9 a.m. Bye bye.